to walk on the ramp. My biggest fear is I'm going to fall down. पर वो पहली बार जब हुआ नहीं, I walked the ramp before and I didn't fall. So now that fear has gone out of my head. Okay. But always nervous. Yeah, it's good to be nervous. Good to be nervous. So let's walk. I'll give you a small rehearsal till we go to your rehearsal. Acha, you're doing mine. I've been loving every How to walk like Alia, please tell me. People will go to sleep if we walk like this. Now let's go for rehearsal fast. Everything you are. Your eyes alone are the brightest stars. I could stand you all night, just drinking in your sunlight. तो पहुंचते ही आलिया ने स्टार्ट कर दिया है अपना रिहर्सल, क्योंकि आज शाम को वो चलने वाली हैं रैम्प पर. एंड ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत तो नर्वस है ही. शी जस्ट टोल्ड मी कि इट्स नॉट इजी फॉर हर टू वॉक ऑन द रैम्प. तो यू कैन सी डेडिकेटेडली वो अपना रिहर्सल कर रही हैं. सो आई एम गोइंग टू एंजॉय माय सेल्फ, वॉच हर वॉक द रैम्प, एंड देन वी आर गोइंग टू आस्क हर वेदर शी एंजॉयज द होल रैम्प एक्सपीरियंस. Can we love tonight? You put all the stars in my eyes. Can we love tonight? You tell me I light up the whole sky. Can we love tonight? You put all the stars in my eyes. Can we love tonight? You tell me I light up the whole sky. तो आलिया ने अपना रिहर्सल तो बहुत सक्सेसफुली किया है. एंड नाउ यू कैन सी हर गेटिंग ऑल ग्लैमरस एंड डॉलिंग अप. उनके शुरू हो गया है प्रिपरेशन फॉर द रैम्प. एंड आलिया, Yes. व्हाट्स गोइंग टू बी द लुक फॉर टुडे? Well, wearing a black dress. So, eyes highlight कर रहे हैं. और because it's a jewelry show, we're doing something very interesting with the hair, which the fabulous Pompey will be doing. आलिया, आई नो यू आर अ ह्यूज करीना कपूर फैन. इसकी वजह से क्या हमारी जिंदगी में पॉम्पी इस वक्त हैं? बिकॉज पॉम्पी ऑल्सो इज heavily involved with Kaina in the sense he does her hair. Alia, so I know. No, no, I am very big Kareena Kapoor fan, but I work with Poppy because he's very, 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 very good. Do you enjoy ramp walking? Well, I've walked once इसके पहले and I really enjoyed it. So this is अभी मेरा second time है. And it's very exciting because it's just all, you know, when you're going through the walk, everyone's looking at you और सब लोग देख रहे हैं, and you know, it's like this nervousness कि कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं, you know, I don't make a mistake or something. So that nervousness is always good, it always keeps the day very exciting. Bye. तो जो भी मैंने हेयर स्टाइल बनाया है वो इनके अकॉर्डिंग ही बनाया है कि वो बालों के काट हो जाएंगे. Dreams are where you'll find me. You're the only thing I get. आलिया बिल्कुल तैयार है, लेकिन इतनी बिजी नहीं है सुबह से कि ना उनको ब्रेकफास्ट का टाइम मिला और ना लंच का टाइम मिला. तो जाहिर सी बात है हमने भी ब्रेकफास्ट या लंच दोनों नहीं किया है. तो होपफुली ड्यूरिंग द डे सम टाइम वी विल ईट, बट अभी इट्स टाइम फॉर आलिया टू हिट द रैम्प. You're the only thing I see. Our dreams are where you'll find me. Your lips like galaxy. हेलो हेलो They tell us we're crazy, but we're just dreaming in open court. They tell us not to friend, love is so fleeting, like distant shores. Like comets and daydreams, but we're still scheming in open court. Everything they can't believe. Can we love tonight? Didn't she look fab on the ramp? I think जो रैम्प का जो थीम था जैस्मिन, वैसे ही लग रही थी आलिया. और अब बारी है मीडिया की. तो ये पूरी मीडिया फ्रेंड्स यहाँ पर है आलिया के लिए, एंड शी इज गिविंग अ वन-ऑन-वन इंटरव्यू. और उसके बाद वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स पाइल्ड अप फॉर द डे. तो कीप वॉचिंग एंड लेट्स हेड टू आलियाज रूम. You put all
चल रहा है आलिया का दिन, लेकिन अब थोड़ा बहुत फुर्सत के पल हमें मिल रहे हैं आलिया के साथ. हेलो मैडम, फाइनली. हाँ, खाना खा रहे हो? हाँ, वो अभी जिम करने जाना है तो आई हैव टू ईट, अदरवाइज माय मॉम विल शाउट इट. Tonight, you tell me I light up the whole sky. तो अभी इस वक्त आप क्या खा रहे हो? ओह यम्मी, स्मेलिंग नाइस. वांट अ बाइट? Can we love tonight? What was veg? Huh? Was it veg? No. Oh, you're eating chicken? I'm a vegetarian. Oh shit. You put all the stars in my eyes. Can we love tonight? आज मैंने आलिया के लिए पहली बार लाइफ में नॉन वेज खाया है. I'm giving you a non-veg. And it tasted yum. What did I eat, Alia? So you had chicken with broccoli and zucchini. You tell me I light up the whole sky. So I have currently turned non-vegetarian. Alia, thank you so much. You're most welcome. My pleasure. और इस वक्त हमारे आपके बेड पे हमारे साथ ये आपका एक सुंदर सा पर्स पड़ा हुआ है. जी. तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि आलिया के बैग में क्या क्या हमको इंटरेस्टिंग चीजें मिल सकती है तो वो क्या हो? Top 5 things which you will remove from your purse. My lip balm, very important for the lips to look nice and beautiful. है अभी charger, which is the most important thing. गाड़ी में भी charger है और मैं charger लेके घूमती हूँ because my battery is always low और because I use my phone a lot. Music सुनती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ. तो charger is very important. Third thing. What is this? दवाई. Medicine. These tablets are called B-long tablets. These tablets get rid of water retention. Number 4, please. Perfume. Da, 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 da. This is actually a men's perfume. Okay. Keep practice and deciding. और कितना perfume आप मारते हो? Like everywhere or just like? मैं actually Do you like बहुत सारा spray and मारती हूँ. walk in? No, that I don't do. That doesn't help. यार आपको मारना है? हाँ मार दो. कहाँ मार रहे हो? मुंह पर. बाल पे. Just see, I'll tell you the reason behind putting it here. Because if you're hugging somebody, this is the first thing that they'll smell. So that's a come. tip. Wow, you smell really nice. Thank you. I have a trick in mind. So that's fourth, and last but not the least. Oh, what is that? Oh, it's so cute. It's my hairbrush. It's so tiny. Brush the hair. Yeah, it's tiny because you know Please see hair this. fall is happening. So cute. इतना छोटू सा. I think हमारा टाइम आ गया है कुछ और नया. We have to rush ना अभी. Now we rush time हो गया है workout का. Zip into the गाड़ी and let's head for the workout with Alia. So we are in Alia's गाड़ी. आप हमको कहाँ लेके जा रहे हो? We are heading to the gym. अभी इस वक्त हम बॉम्बे के एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हैं. तो जब आप मुंबई के हाईवे पे जाते हो तो आपको अपने फिल्म की हाईवे की क्या क्या यादें आती हैं ताज़ा? Very nice experience for me. वैसे तो ये पूरा the whole fact that I've entered the film industry वो ही एक journey है मेरे लिए. पर highway was like one experience जो I think I can say kind of changed my life. एक साल पहले की आलिया थी और अब की आलिया में कितना बड़ा फर्क आ गया है. I feel I've aged mentally. मैं mentally 5 साल बड़ी हूँ. Basically what my idea is in my head that I can handle everything by myself. Probably I can't, but that's the idea. आपको सड़कें याद है मुंबई की? If I tell you to go from here to here, you can manage your way. पता है आपको? Yeah, pretty much, yeah. Alright, so she's a Bombay girl, and now very soon we're going to be reaching उनके gym, and हम कसरत करेंगे थोड़ा आलिया के साथ, and I'll try and get as fit as I can, like Alia. लिफ्ट काम नहीं कर रहा है उन लोगों को. डोंट टेल मी. 8 वाला चलना पड़ेगा ऊपर. अरे मैंने अभी भी कार्डियो किया है. अच्छा. So cardio part 2. I don't need to exercise anymore. Floor number 3. अच्छा मैं थर्ड फ्लोर ऑलरेडी. अभी कौन सा फ्लोर हुआ है? Floor number 4. हम 4 लोग floors. पेंट हो रहे हैं. Alia, how many more floors? This is the 7th floor. One more floor. हे भगवान. पहुंच गए हम लोग. I've done cardio. After the 8-kilometer jog up to this high altitude place, Alia is getting all set for her gym. एकदम तैयार हो रही हैं आलिया. देखिए कितनी मेहनत से वो जूते पहन रही हैं अपने. Very good. Quickly worn her shoes. All set. Ready.
Come on. आलिया, you want to tell our viewers, ये एक बहुत ही specific training, बहुत ही नया तरीका है ट्रेनिंग करने का. आलिया बताएंगे हमको इसके बारे में. The whole concept is we are working out at a higher altitude. हाँ. So the oxygen level is lower in this room. The body burns fat faster and you burn for the next 8 hours after workout as well. फिल्मों में आने के पहले you were this fit? No. कि फिल्मों के आने के बाद आपको ये फिटनेस का भूत चढ़ा है? फिल्मों में आने के लिए. तो वर्कआउट करते टाइम कैसा म्यूजिक सेट होता है आलिया? All Bollywood channels. तो जब भी आलिया वर्कआउट करती है तो UTV स्टार जरूर लगा होता है और अब वर्कआउट शुरू. I've been loving everything you are. So you're working out the upper body. Yeah, so I'm basically working upper body. I'm doing whole body actually today. Starting with upper body and then. Your eyes alone are the brightest stars. I could stand you all night, just drinking in your. Now that we have Alia resting, are you all getting all set, getting all warmed up? Yeah. But Arms are already hurt. Sunlight. Can we love tonight? You put all the stars in my eyes. Can we love tonight? You tell me I light up the whole sky. Can we love tonight? You put all the stars in my eyes. Can we love tonight? You tell me I light up the whole sky. TV stars. Breakfast to dinner with Alia Bhatt, who is working out now for y'all. I'm very proud of Alia. इतना हार्ड वर्क करते हुए मैंने पहली बार देखा है किसी को fully involved in her workout, हाँ? I think everybody has to be fully involved, otherwise nothing happens. अगर आपको अपने फैंस को कुछ एक फिटनेस टिप देना हो तो क्या दोगे? Give yourself a break, but work out like probably 5 to 6 times a week. Do a combination of cardio. If you don't want to do weight training, just go and jog on the beach. चलो, let us head, Alia, and our day has just begun. Lots more to do today. Okay, bye. Our dreams are where you'll find me. रात हो गई है लेकिन आलिया का दिन अभी खत्म नहीं हुआ है. वो बैक टू बैक चीजें कर रही हैं. अब वक्त है उनके फोटोशूट का. आप देख सकते हैं वो कितनी तैयार हो रही हैं. अनुष्का खन्ना के फोटोशूट के लिए जो उनका फॉल विंटर कलेक्शन है. तो लेट्स सी कि आलिया क्या क्या कपड़े पहनने वाली हैं, कैसे पोज ट्राई करने वाली हैं. मैं भी ट्राई करूंगी उनकी तरह पोज करने का इफ शी टीचेस मी. एंड सो a lot more fun awaiting you. So come along this way. You're the only thing you're the only thing I see. Our dreams are where you. The whole collection is all about effortless glamour, and that's why we thought Alia would be perfect for it. Find me. Your lips like galaxy. जब आप इस स्पेस में एंटर करते हो, do you transform into this total diva? No, I think it's the music that makes me transform really. I just have a lot of fun and I love being in front of the light and being in front of the camera, and that's just what I want to do. I love the way you were posing. Huh? You were like very like doing all those shots, and then I want you to actually take pictures and tell me how to pose. So Okay. So the simplest pose is basically one hand here, okay, like that. Keep one hand on your waist here. and just like bend a little forward. I don't know how to use this camera. Okay, wait. Smile. One more element I want to do with you is the break free dance. You should do it. Okay, but you need to join me. Okay. So can we have a little loud music? It's like I'm pushing people away. Go away. But I'm having fun in doing that. And the head. And the head goes here. That's one
head bob also like that. Okay. And कहाँ से सीखे आपने ऐसे moves? Who has taught you Well, these? I think when the music plays, you just kind of get with it. So, Like trance.